Assalamu alaikum. Lesson number 3 for the TOEFL learning for the beginners. This lesson हम इस lesson में cover करेंगे articles A and N. For the quick recap of those who have just signed or just logged in this lesson, joined us, हमने first lesson में sentence structure के बारे में study किया था, subject, verb, complement and modifier. उसके बाद हमारा lesson number 2 comprise करता था नाउन काउंट नाउन्स के बारे में, इरेगुलर काउंट नाउन्स के बारे में, और फिर हमने एक्सरसाइज की जिसमें हमने मॉडिफायर्स को, हमने डिटर्मिनर्स को देखा कि फॉर काउंट नाउन हमने क्या इस्तेमाल करना है और फॉर नॉन काउंट हमने क्या इस्तेमाल करना है. होपिंग कि वो सब क्लैरिटी हो गई है. आज के हम लेसन में कवर करेंगे आ एंड एन. सो लेट्स जंप इन. A और N can precede only singular count nouns. हम count nouns पहले स्टडी कर चुके हैं. The both means one. अगर हमने किसी चीज़ के बारे में a और an लिख दिया है उससे पहले, तो उसके बाद हमको one लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मतलब one ही होता है. They can be used in general statement on to introduce a subject which has not been previously mentioned. ठीक है, जैसे कि इसका मतलब हुआ कि a baseball is round. Generally it means all the baseballs. I saw a boy in the street. We don't know which boy this is referring to. It's about a general statement. It is not showing any specificity of the subject. But a means one basketball, baseball is round, or I saw a boy means one boy in the street, which we don't know the identity. N is used before the words that begin with a vowel sound. A is used before the words that begin with a consonant sound. For example, a book, an apple. A, E, I, O, U, these were the vowel sounds, so we know all these details a bit. So N use होगा उन count nouns के सामने से पहले जो कि आपके पास vowel हैं. A, E, I, O, U. और आ इस्तेमाल होगा फॉर द काउंट नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं. सम ऑफ द वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज द स्पेलिंग डजंट इंडिकेट द प्रोनाउंसिएशन. जैसे कि अ हाउस, आ मीन्स वन, हाउस मीन्स घर, बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड. हाउस डज नॉट हैव अ वाउल साउंड. एन आवर, अब इसकी स्पेलिंग एच ही मौजूद है, लेकिन चूँकि ये साउंड आपका ओ के हिसाब से कर रहा है तो ये वाउल साउंड है. इसमें एच आपके पास साइलेंट है, सो इट साउंड्स लाइक आवर. एंड ओ इंक्लूड्स अ वाउल, सो इसलिए हम इसको एन आवर कहेंगे. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का यू जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ वाउल, मगर हम यहाँ पर इसको अ ही बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है. इसमें इसकी वाउल साउंड नहीं है. एंड अम्ब्रेला में यू मौजूद है लेकिन इसकी साउंड वाउल है, तो इसलिए हम इसमें एन यूज़ करेंगे. द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड एंड दस मस्ट ऑलवेज प्रिसीडेड बाय आ. रिमेंबर, जब आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हमेशा उससे पहले आ इस्तेमाल होगा. फॉर द वाउल वी विल यूज़ एन. अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. यूरोपियन, again EU, but its sound is consonant, so we use a European. A eulogy, euphemism, eucalyptus. House, home, heavy, half, they all will have a in the beginning. Uniform, university, universal, union, they all with U but having consonant sound will be preceded by a. These are the following words that are beginnings with a vowel sound and thus must always preceded by N. Hour, ire, herbal, honor, uncle, umbrella, unnatural, understanding. So remember, इसमें U मौजूद है लेकिन इसकी जो vowel sound है that makes it qualify कि हम इसमें N यूज़ करें. अब this was all about आर्टिकल्स. आई होप आपको आ और एन क्लैरिटी हो गई है, आपको वाउल समझ आ गया है, आपको कॉन्सोनेंट पता है. जो एग्जांपल्स इसमें आपको दी गई थी जिनकी साउंड आपकी कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने उसमें आ यूज़ करना है, वो उनको दिमाग में रखिएगा.
और जिनकी वाउल साउंड है उनमें अन यूज़ करना है, उनकी क्लैरिटी रखिएगा। इस सब के बाद हम अपने लेसन 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है अब तक लेसन 1, 2 और 3 में तमाम चीज़ों की, ताकि हम इस ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक्स को। तो आप अपने इसमें आपको क्लैरिटी रहेगी राइटिंग में और कॉन्वर्सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो।